নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভত আহিবলগীয়া যিবিলাক ৰচনা আছে তাৰ ভিতৰত এখন ৰচনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, নিবন্ধ লেখন। আজি আমাৰ টপিকটো হ'ব পুস্তকালয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিয়ে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু ইয়াৰ পিছত এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আৰু কি টপিকৰ ওপৰত তোমালোকক ৰচনা লাগে মোক জনাবা। যিহেতু HSLC পৰীক্ষালৈ আৰু বেছি দিন নাই, গতিকে তোমালোকে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবা তেনেকুৱা টপিক মোক তোমালোকে পঠিয়াবা কমেণ্টত। মই সেই টপিকবোৰৰ ওপৰত ৰচনা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুস্তকালয় হৈছে পুথিভঁৰাল। এই ৰচনাখন তোমালোকে 8 নম্বৰত লিখিব লাগিব। তো প্ৰথমে আমি ৰচনাখনত লিখিম ভূমিকা। ভূমিকাত আমি কি লিখিম? इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई अन्य वस्तु पवित्र नहीं हो सकती। এই সংসাৰত জ্ঞানৰ বাহিৰে কোনো অন্য বস্তু পবিত্ৰ নহয়। ज्ञान के अभाव में मानव तथा पशु में कोई अंतर नहीं होता। জ্ঞানৰ অভাৱ হ'লে মানুহ আৰু পশুৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাথাকিব। জ্ঞান আছে কাৰণে মানুহ আৰু পশুৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। ज्ञान लाभ কৰাৰ বহুতো উপায় আছে। इन सब में पुस्तक को ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। এইসমূহৰ ভিতৰত কিতাপক জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায় বুলি কোৱা হৈছে। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान सूचनाओं का संग्रह रहता है। पुस्तकालय পুথিভঁৰাল এনেকুৱা এটা ঠাই য'ত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জ্ঞান আৰু বিভিন্ন ইনফৰমেশ্যন আমি কি পাওঁ সংগ্ৰহ কৰা থাকে, তাৰ পৰা আমি ল'ব পাৰোঁ পুথিভঁৰালৰ পৰা। আকৌ এবাৰ চাবা। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई अन्य वस्तु पवित्र नहीं हो सकती। ज्ञान के अभाव में मानव तथा पशु में कोई अंतर नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। इन सब में पुस्तक को ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान सूचनाओं का संग्रह होता है। नेक्स्ट, पुस्तकालय यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तकालय शब्दটো 2টা শব্দ মিলি বনোৱা হৈছে। পুস্তক যোগ আলয়। কেতিয়াবা তোমালোকৰ এইটো সন্ধি বিচ্ছেদ কৰাটো আহে, এনেকৈ এইটো চাব পাৰিবা। पुस्तक যোগ আলয় पुस्तकालय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री जैसे मानचित्र, पुस्तक, पत्रिकाएं, हस्तलिखित ग्रंथ एवं अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है। पुस्तकालय সেই ঠাইখিনিক কোৱা হয় য'ত অধ্যয়ন সামগ্ৰী যেনে মানচিত্ৰ, পুস্তক, কিতাপ, পত্ৰিকা, হস্তলিখিত হাতেৰে লিখা গ্ৰন্থ আৰু অন্য পঠনীয় সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰা থাকে। पुस्तकालय यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तक जुग आलय। पुस्तक प्लस आलय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री जैसे मानचित्र, पुस्तक, पत्रिकाएं, हस्तलिखित ग्रंथ एवं अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय महत्व विशेषत्व। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों का समूह होता है। पुस्तकालय সেই ঠাই য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কিতাপ পাওঁ। यह पुस्तक पाठकों को कुछ समय पढ़ने के लिए उधार में दिया जाता है। এই কিতাপসমূহ পাঠকসকলক যিসকলে পঢ়ে এইবিলাক পাঠক বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকক কিছু সময়ৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ দিয়া হয়। जब समय समाप्त हो जाता है तो पाठक पुस्तकों को वापस कर देता है और नई पुस्तक उधार लेता है। যেতিয়া সময়সীমা পাৰ হৈ যায় তেতিয়া যিজনে পঢ়োতাজনে কিতাপখন ঘূৰাই দিয়ে আৰু কি কৰে নতুন এখন কিতাপ আকৌ তেওঁ নিব পাৰে পঢ়িবলৈ। पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों का समूह होता है। यह पुस्तक पाठकों को कुछ समय पढ़ने के लिए उधार में दिया जाता है। जब समय समाप्त हो जाता है तो पाठक पुस्तकों को वापस कर देता है और नई पुस्तक उधार लेता है। তোমালোকক ওপৰত যে মই পইণ্ট কেইটা লিখি দিছোঁ সেই পইণ্টটো লিখি তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা, তলত আস্তানি দিবা। প্ৰথমতে ভূমিকা লিখিলা, ভূমিকা লিখি ভূমিকাটোৰ তলত আস্তানি দিবা, আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। তাৰপিছত পুস্তকালয় কা महत्व বুলি লিখিবা, আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। তেতিয়াহে গম পাব যে পইণ্ট দি লিখিছা। পইণ্ট দি লিখিলে নম্বৰ বেছিকৈ পাবা। নেক্সট, পুস্তকালয় কে প্ৰকাৰ। পুস্তকালয়ৰ পুথিভঁৰালৰ ভাগসমূহ।
पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। पुथिभराल विभिन्न प्रकार থাকে। इनमें से प्रथम प्रकार के पुस्तकालय वह है जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में होते हैं। प्रथम प्रकाৰৰ पुस्तकालय যেটা আমি তোমালোকৰ স্কুলতো আছে চাগে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এইবিলাকত আমি দেখিবলৈ যেটো পাওঁ সেইটো হৈছে प्रथम प्रकारत মানে হেতুক ৰাখা হৈছে। पुस्तकालय के दूसरा प्रकार है निजी पुस्तकालय। किसमाনৰ নিজৰ ব্যক্তিগত पुथिभराल থাকে। अध्यापकों, साहित्यिकों, वकीलों आदि के पुस्तकालय को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। যিবিলাক অধ্যাপক থাকে, সাহিত্যিক থাকে, উকিল থাকে, তেওঁলোকৰ মানে পুথিভঁৰালসমূহক এইটো শ্ৰেণীত ৰাখিব পাৰি। तीसरे प्रकार का पुस्तकालय है सार्वजनिक पुस्तकालय। और 3 নম্বৰ প্ৰকাৰটো হৈছে সাৰ্বজনিক পুস্তকালয়, য'ত মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী, সব ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা জিলা পুথিভঁৰাল থাকে, ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি তাত মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগে, সদস্য হ'ব পাৰে। তাৰপিছত কিবা এটা তেওঁলোকে মানে মান্থলি কিবা এটা ফিজ দিব লাগে, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে তাত কিতাপ পঢ়িব পাৰে। সেইটো এটা তিনিটা ভাগ। প্ৰথমটোত কৈছে যে আমাৰ স্কুল, কলেজ, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এইবিলাকত যেটো পুথিভঁৰাল থাকে সেইটো তোমালোকে যেটো স্কুলত পোৱা নিজৰ সেইটো এটা। নেক্সটটো কৈছে ব্যক্তিগত পুথিভঁৰাল, আৰু তাৰ পিছৰটো কৈছে সাৰ্বজনিক পুথিভঁৰাল। সেইটো আমি ধৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী, জিলা পুথিভঁৰালটো ইয়াৰ মাজত আনিব পাৰোঁ। নেক্সট टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रकार। पुस्तकालय पुथिभरालत की धৰণৰ किताब থাকে। पुस्तकालय में अनेक प्रकार के पुस्तकें होती है। पुस्तकालय पुथिभरालत विभिन्न प्रकार किताब থাকে। पाठक अपने पसंद के पुस्तक के उधार लेते हैं। माने पढ़ुৱৈসকলে নিজৰ পছন্দৰ কিতাপসমূহ ধাৰলৈ লয়। पुस्तकालय में उपन्यास, जीवनी, आत्मकथाएं, कविताएं, कहानियाँ आदि से संबंधित पुस्तकें होती है। এই পুথিভঁৰালসমূহত কি কিতাপ থাকে? উপন্যাস, জীৱনী, আত্মকথামূলক যিবিলাক কিতাপ আছে সেইবিলাক, কবিতা পুথি, কাহিনী এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যায়। कुछ पुस्तकालय में समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी होती है। কিছুমান পুস্তকালয়ত পুথিভঁৰালত আমি বাতৰি কাকতো দেখিবলৈ পাওঁ। সব পুস্তকালয়ত পুথিভঁৰালত নাপাওঁ, কিছুমানত বাতৰি কাকতো পোৱা যায়। पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रकार। पुस्तकालय में अनेक प्रकार के पुस्तकें होती है। पाठक अपने पसंद के पुस्तकें उधार लेते हैं। पुस्तकालय में उपन्यास, जीवनी, आत्मकथाएं, कविताएं, कहानियाँ आदि से संबंधित पुस्तकें होती है। कुछ पुस्तकालय में समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी होती है। কিছুমান পুথিভঁৰালত কি পোৱা যায়? সমাচাৰ পত্ৰ মানে বাতৰি কাকত, মেগাজিন এইবিলাকো পোৱা যায়। তোমালোকে মাজতে এটা কথা কওঁ, তোমালোকৰ স্কুলত পুথিভঁৰাল আছেনে নাই এইটো কথা কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা। ভিডিঅ'টো যেতিয়া চাবা, এতিয়া চোৱা পিছত চোৱা, যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাবা মোক কমেণ্ট বক্সত এবাৰ জনাবা তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত পুথিভঁৰাল আছেনে নাই। আৰু যদি আছে পুথিভঁৰালটো কিমান ডাঙৰ, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যায়, বা পুথিভঁৰালটো কিমান ধুনীয়া, সেইবিলাক কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা। তেতিয়া মই গম পাম তোমালোকে কিমানজনে ভিডিঅ'টো চাইছা। ঠিক আছে, যেতিয়াই মানে ভিডিঅ'টো চাবা তোমালোকে লিখি ল'বা, তেতিয়া মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা যে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত পুথিভঁৰাল আছে নে নাই। নেক্সট পইণ্টটো হ'ব पुस्तकालय के लाभ। पुस्तकालयৰ দ্বাৰা, पुথিভঁৰালৰ দ্বাৰা আমাৰ কি লাভ হয়। आधुनिक महंगाई में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक ग्रंथ खरीदना संभव नहीं है। এতিয়া যিমান বস্তুৰ দাম মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে সকলো মানুহে সকলো কিতাপ কিনিব নোৱাৰে। पुस्तकालय में नाममात्र शुल्क देकर अथवा मुफ्त सदस्यता प्राप्त करके अधिक ग्रंथ पढ़ा जा सकता है। पुस्तकालयत नाममात्र এটা ফিজ দি, নামমাত্ৰ এটা মাননি এটা দি, পইচা এটা দি, মাহিলী এটা ফিজ এটা দি, বা কেতিয়াবা আমি মানে মেম্বাৰশ্বিপ লৈ, ফ্ৰী মেম্বাৰশ্বিপ মানে ফ্ৰীতে আমি সদস্য হৈ কি কৰিব পাৰোঁ? বহুত গ্ৰন্থ পঢ়িব পাৰোঁ। जहाँ हम अपने अवकाश के क्षणों का सदुपयोग कर सकते हैं। ইয়াত আমি কি কৰোঁ? আমাৰ যিখিনি আজৰি সময় থাকে সেইখিনি আমি ভালদৰে পাৰ কৰিব পাৰোঁ। पुस्तकालय में जाकर हमारा पर्याप्त मनोरंजन भी होता है। पुথিভঁৰাললৈ গ'লে আমি কি পাওঁ? मनोरंजनो पाওঁ। पुस्तकों में ऐसी शक्ति होती है जो हमारा हृदय और मस्तिष्क का विकास करती है। कितापत এনেকুৱা শক্তি থাকে যি কি কৰিব পাৰে? আমাৰ মস্তিষ্ক আৰু হৃদয় বিকশিত কৰিব পাৰে। আকৌ এবাৰ, पुस्तकालय के लाभ। आधुनिक महंगाई में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक ग्रंथ खरीदना संभव नहीं है। पुस्तकालय में नाममात्र शुल्क देकर अथवा मुफ्त सदस्यता प्राप्त करके अधिक ग्रंथ पढ़ा जा सकता है। जहाँ हम अपने अवकाश के क्षणों का सदुपयोग कर सकते हैं। पुस्तकालय में जाकर हमारा पर्याप्त मनोरंजन भी होता है। पुस्तकों में ऐसी शक्ति होती है जो हमारा हृदय और मस्तिष्क का विकास करती है। কিতাপত এনেকুৱা শক্তি থাকে যিয়ে কি কৰে? আমাৰ
মস্তিষ্ক আৰু হৃদয় কি কৰিব পাৰে বিকশিত কৰিব পাৰে लास्टत আহিব उपसंहार माने सामरणी अच्छे पुस्तकालय राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ভাল পুথিভঁৰাল এটাই राष्ट्र निर्माणत महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करे आज हमारे देश में अनेक पुस्तकालय है लेकिन अभी भी अच्छे पुस्तकालय की बहुत कमी है আজি আমাৰ দেশত বহুতো পুথিভঁৰাল আছে কিন্তু এতিয়াও ভাল পুথিভঁৰালৰ অভাৱ আছে अतः सरकार तथा अन्य संस्थाओं को चाहिए कि अच्छे पुस्तकालय की स्थापना करे সেইকাৰণে सरकार বা অন্যান্য যিবিলাক সংস্থা আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে ভাল পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আকৌ এবাৰ চাবা अच्छे पुस्तकालय राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आज हमारे देश में अनेक पुस्तकालय है लेकिन अभी भी अच्छे पुस्तकालय की बहुत कमी है अतः सरकार तथा अन्य संस्थाओं को चाहिए कि अच्छे पुस्तकालय की स्थापना करे আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ